इंदिरा गांधी इज असैसिनेटेड। राजीव गांधी बंगाल में कैंपेनिंग कर रहे हैं, उन्हें खबर मिलती है कि इंदिरा गांधी को शॉट किया गया। प्लेन से वो दिल्ली आते हैं और दिल्ली में एम्स में इंदिरा गांधी का इलाज चल रहा है और बाहर ये डिसाइड हो रहा है कि कैसे प्रणब मुखर्जी को प्राइम मिनिस्टर ना बनने दिया जाए। प्रणब मुखर्जी दिस ऑल्सो इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग। प्रणब मुखर्जी ने क्या कहा प्लेन में वापस आते टाइम, वेदर अ नेचुरल successor should be the number 2, whether it's interim arrangement or whatever. Zail Singh जब आए और उन्होंने कहा था किसी को बाद में कि उस दिन when I decided to swear in राजीव गांधी, मैंने इंदिरा जी के जितने भी एहसान थे मेरे ऊपर, in fact others had said, which I have not put in the book, others had told me at that time, and politicians also, he had said मारो सालों को, मारो नेहरू। Now coming to the शाह बानो केस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट शाह बानो के फेवर में वर्डिक्ट देती है और राजीव गांधी उस वर्डिक्ट को पलट देते हैं। शुरू में राजीव गांधी was for the judgment, and judgment is about an old woman with 5 children, 45 years of marriage, being given a talaq. 3 कंटेंडर, टॉप कंटेंडर, देवीलाल, चंद्रशेखर, वीपी सिंह। कैंपेन हो रहा था तो वीपी का नाम था, वीपी विकल्प है राजीव के, एंड देवीलाल also was taking VP's name, projecting him. And today you are right, it is no prime minister has been able to reverse that decision. That's correct. And BJP would not be what it is today if Mandal had not happened. It would have been a Baniya Brahmin party. I don't think Narasimha Rao colluded with BJP कि हम मंदिर को गिराएंगे। Imposition of national emergency, ऑपरेशन ब्लू स्टार, शाह बानो केस वर्डिक्ट को ओवरटर्न करना, मंडल कमीशन लागू करना, बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाना, पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करना, ये सारे फैसले अलग अलग प्राइम मिनिस्टर ने अलग अलग समय पे लिए। बट इन फैसले के पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? इफ यू वांट टू नो, आई वुड सजेस्ट यू टू रीड दिस बुक बाय नीरजा चौधरी, और कंट्रीब्यूटिंग एडिटर। द टाइटल ऑफ दिस बुक इज हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। Neerja has been a journalist for over 30 years. She's a contributing editor to Indian Express and has worked for several newspapers. Neerja, my first question that I would like to ask you कि इस बुक में ऐसा नया क्या है जो लोगों को पहले से नहीं पता है? Because all those events that I have mentioned, lot has been written about them. तो इस बुक में नया क्या है? ये तो बहुत बड़ा सवाल, मैं भी अपना कोलेट कर रही थी इस बुक में क्या क्या नया है। एक चीज़ ये भी नई है जो पहले छुटपुट शायद निकली है कि इंदिरा गांधी जब पावर में नहीं थी, 77 में हार गई, हाउ द ट्रांजिशन ऑफ पावर टुक प्लेस, कि जनता वाले जो आए, मुरारजी देसाई, उनको लगता था कहीं ये कू ना कर दे, आर्मी के टच में है, क्या होने वाला है। और आईबी ने वॉर्न भी किया था, जॉर्ज फर्नांडिस जो उस समय मिनिस्टर बने थे, कि संदूक निकाले गए घर से और उनके छतरपुर फार्म में ले जाए गए। और जब वो लोग गए, रवि नायर जो उनके एड थे, तो रेकी किया तो कुछ नहीं मिला उन्हें। फिर एक कंट्रैप्शन मशीन होती है जिससे आपको पता लगता है कि ग्राउंड में चीज़ें हैं कि नहीं, उसको लेके गए, तब तक संदूक गार्ड्स ने बोला निकल गए थे। तो ये जो था ना, इंदिरा गांधी इनको बहुत शक की नज़र से देख रही थी कि संजय को कैसे हार्म ना करें, और ये लोग इंदिरा गांधी को बहुत शक की नज़र से देख रहे थे, वो क्या करने जा रहे हैं टू अनडू द वर्डिक्ट। ये है। फिर बाकी तो कहानी है कि इंदिरा जनता पार्टी अपने वेट ऑफ इट्स ओन कॉन्ट्रडिक्शन केम डाउन वेरी क्विकली। बट व्हाट इज नॉट सो वेल डॉक्यूमेंटेड इज इंदिरा गांधी की तरफ से क्या साम दाम दंड भेद किया गया ताकि उनको हराया जाए। सो बेसिकली इस बुक में 6 प्राइम मिनिस्टर्स के डिसीजंस मेंशन हैं। इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। वन क्वेश्चन दैट विल अराइज कि व्हाई हैव यू केप्ट मोदी आउट ऑफ इट? बिकॉज उनके रिजीम में भी जितने डिसीजंस लिए गए वो काफी सिग्निफिकेंट हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, जीएसटी हो, एप्लीकेशन ऑफ 370 हो, ट्रिपल तलाक हो। देखिए सिग्निफिकेंट तो बहुत डिसीजन आपने ठीक कहा, 370 फार रीचिंग डिसीजन, डिमोनेटाइजेशन, पुलवामा जो कि, और तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, बहुत कम विश्व के नेता हैं जो इतने लोकप्रिय होंगे 10 साल के बाद। 3rd टर्म की वो कर रहे हैं।
मैंने सोचा था लिखने के लिए मोदी पे, डिसीजन भी सोचे थे, काम भी किया था, लिखना भी शुरू किया था। फिर मुझे लगा कि एक तो वर्क इन प्रोग्रेस है, आई वोंट हैव द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट एज आई डू विद द अदर प्राइम मिनिस्टर जो असेस देम। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, people around the prime minister are always very wary of talking when the person is in power. They talk much more freely after the person demits power. तो ज़्यादातर लोगों ने जिन बाकी प्रधानमंत्रियों के बारे में बात की after they went out of power. So मुझे लगा given the impact Modi has made larger than life in people's consciousness, for me to not to do justice to him in the same way as I had done with the other prime ministers would be less than fair. Maybe you will write a different book. Maybe a different book, maybe in the future if I get enough material. So I felt it would be less than fair. That is why I decided not to include it. Let's coming back to this book. कई सारे एनेक्डोट्स मैंने पढ़े और मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये बुक, एंड आई एम श्योर ऑल द जो भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है उसे ये बुक पढ़नी चाहिए। नाउ दिस क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू आस्क, ये ट्विटर पे बहुत लोगों को अपसेट कर देगा। Was RSS supporting Indira Gandhi in emergency? देखिए, RSS was also supporting JP to, जब बाला साहब देवरस को जेल में डाल दिया इंदिरा गांधी, पहले शुरू का रिएक्शन RSS का था बहुत अच्छा, ट्रेन टाइम पे चल रही हैं, लोग ऑफिस में काम पे टाइम से जा रहे हैं, ये मतलब डिसिप्लिन अनुशासन आ गया है। लेकिन जब बाला साहब देवरस को जेल में डाल दिया और इतने RSS कार्यकर्ताओं को डाल दिया, देन दे ऑल्सो स्टार्टेड टू वर्क विद JP अंडरग्राउंड, इनके लोगों ने। बट आफ्टर अ वाइल RSS गॉट डिवाइडेड इनटू टू स्ट्रीम। दे वर ऑल्सो दोज, बाला साहब देवरस वाज राइटिंग, द RSS चीफ वाज राइटिंग टू Indira Gandhi, reaching out to her, praising her, but she didn't respond all through the emergency. They also tried to reach out to Sanjay. Now, they did support the emergency, and Kamal Nath played a role here. Okay. He got Bala Saheb Thackeray, Shiv Sena ke jo head the, to support the, he talked to him. Shiv Sena decided to support the emergency, even though Sena was a complete rival to the Congress. Of course. In Maharashtra. And it was Bala Saheb Thackeray who played a role with the RSS to get them to support the emergency. And you have quoted a leader saying, "Na जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पे." वो तो 84 का। अच्छा, this was RSS leader telling. This is Nanaji Deshmukh in 84. इंदिरा गांधी कहती थी 1980 में भी, जो privately कहती, publicly never, that because of the RSS I got the number of seats that I did, 353, which is more than what she had got after the Bangladesh war in that election. So she did, because you see, she'd lost the support of the Muslims during the emergency because of forced sterilization. So she was trying to Hinduize her politics, her persona, in order to consolidate that vote back behind her. And what better than others? And she felt whether they'll support her actively or not, इनको neutralize कर दिया जाए, that they don't actively work for the Janata Party, which they did not. They didn't. They were unhappy with Jagjeevan Ram being the prime ministerial candidate. उनका upper caste vote उसको पसंद नहीं करता था. And Vajpayee was trying to secularize his image, while Indira Gandhi was trying to Hinduize her image. तो कहीं ना कहीं RSS was looking at, and maybe supported her. This can be a question, but RSS, Indira Gandhi sought the support of RSS even in the 77 election. जब उन्होंने मैसेज भेजा था, संघ चुनाव से अलग हो जाए, because they had been wooing her. This was her response, and they sent her a message that we've already committed. Elections हो रहे हैं, जनता पार्टी को support करेंगे. After the elections, we will talk to you. Then 80 में ये हुआ, 1982, 83. Then the elections took place in Delhi, local elections, and then in Jammu. That's when the Congress did very well. Again, ostensibly because of the Hindu support, and RSS was supposed to have had a role in that. 84, you know what you're talking about, Nanaji Deshmukh, that he said ना जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे. Openly उन्होंने कहा. 89,
Govindacharya is called by R.K. Dhawan, Mrs. Gandhi's aide, and he seeks the support of RSS. And Govindacharya tells this lovely story. मुझे अभी भी याद है वहाँ जाके उन्होंने मुझे समोसे और काजू खिलाए थे. And he sought our support. So over a period, Congress leaders certainly believed that RSS had played a role in their victory. Now you just mentioned about Jagjeevan Ram, and there's a very interesting story about his son. So I want to ask you, this controversial sex videos that was exposed, sex video of Jagjeevan Ram's son, and that dented his image, and he could not become the prime minister. Was Indira Gandhi behind the exposure of that video? उसके पीछे क्या कहानी है? That's a tantalizing question for me. It remains whether she was actually behind it or she seized it as an opportunity. Okay. By that time, Sanjay. Who shot that video? हाँ? Who shot that video? कहाँ से वो वीडियो या वो क्या कहते हैं वो सुरेश राम एक theory थी इसमें कई theories चली थी. There was Suresh Ram's version, there was Rajnarayan's version. Rajnarayan was acting at the behest of Charan Singh. Charan Singh wanted to become the prime minister. Sanjay Gandhi and Rajnarayan had hatched a plot कि पहले बाबूजी को अलग किया जाए sideline, then we will deal with Morarji one by one. तो ये किस्सा हुआ कि whether Suresh Ram had shot this, he got vicarious pleasure out of it, shooting this, he had a girlfriend, or it was, he said that they had abducted him, Rajnarayan's right-hand people, two of them, and K.C. Tyagi was one of them. And they had then taken, bashed him up, and while he was unconscious, they had taken these pictures. And so whatever be the truth of that, there are different versions to that story. But the pictures were given to Kapil Mohan, who was heading Mohan Meakin, a liquor company, and was very close to Indira Gandhi at that time. Babuji came to meet Rajnarayan. वो deal कुछ नहीं हो पाया उस रात को. Kapil Mohan gave half the pictures to Anil Bali. Rajnarayan ne आधी रखी and said, you take them now at this time, 1 o'clock at night, straight to Sanjay Gandhi. So he drove and took them. Okay. Now talking about ideological difference between Indira Gandhi and her father Jawaharlal Nehru. You have mentioned that in the book. There is one incident where she meets a UP minister, I forgot his name, and she says, "मेरा बाप संत था, मैं संत नहीं हूँ." It was a message to the syndicate, one of the syndicate, so the CM of UP, कि आप, I know कि आप क्या खुराफात कर रहे हो. And she wasn't, this minister was in front of her. She didn't even look at him. She continued to do her work and said, remember, मेरा बाप संत था, मैं नहीं हूँ. How different she was from Jawaharlal Nehru? कितना मतलब? She used to feel that people, from whatever one has gleaned, that Nehru was too nice. Yeah. Too nice, could be used by people. She was tougher. Nehru was also ideologically clear. He was of a socialist bent, left of center. And of course, as I say, they built the edifice of modern India. Yeah. She fluctuated. In the late 1950s, when she became the Congress president, she was right-wing. In 66, 67, when she took over as prime minister and called P.N. Haksar to head her PMO, and there was this Kashmiri mafia, Kashmiri bureaucrats who ran the PMO for her. She was totally left of center until 70, soon after that. But while Haksar was there, she was left of center. And when Sanjay became powerful in 72, 73, really in 73, that's when Sanjay was totally anti-communist, pro-America, right-wing. She became right-wing again. So she did a lot of ideological flip-flops. But power, she understood the nature of power. She understood statecraft. She understood ground realities of India. Okay. Now, Indira Gandhi imposed emergency in 1975. 2 साल तक सेंसरशिप लगा हुआ है और पॉलिटिकल लीडर्स, ऑपोजिशन लीडर्स सारे जेल में हैं. 77 में आफ्टर दिस कुछ दिन पहले she decides to just announce the election. Now she has that intelligence input कि वो शायद इलेक्शन जीत जाएगी, बट वैसा होता नहीं है. और जैसे ही वो इलेक्शन अनाउंस करती हैं, उसके बाद का एक इंसिडेंट आपने बुक में मेंशन किया है
कि जब से इलेक्शन अनाउंस हुआ है चपरासी भी मुझे ठीक से पानी नहीं पिला रहा है. So that was a signal given by people to Indira Gandhi that we are going to teach you a lesson. What was that? ये पूरा जो she was बहुत hostile माहौल था when she lost, and she was very crestfallen. Pupil Jaikar, her friend, had gone. They sat for hours together silently that this should, and what worried her was not just the defeat, that people were seeing her as a villain. And she talked about going to the Himalayas. And she said, she met Morarji Desai also and told him this, as long as I am ready to retire, as long as you don't touch Sanjay. Yeah. And they were not, they assured her that no physical harm would come to Sanjay, but they started, the cases against Sanjay and her, the Shah Commission was constituted. So her decision to go for elections is something that tantalizes observers and experts even till today. Because he had no reason to go for elections, ostensible reason. So was Sanjay becoming too large for life? What had he got a coterie with several people like Bansi Lal who wanted to change the system and make it a presidential system? There was a lot of buzz at that time. But my own, having looked at it, why she went in for elections. Spiritual reasons, could it be? Was she Nehru's daughter, therefore at heart a Democrat? My own conclusion is that she went in for elections to legitimize the role of Sanjay and as her successor, and elections would give him that kind of legitimacy. That is why in 1980, when she came to power, and Sanjay wanted to become chief minister, had sent Akbar Dumpy Ahmed to Lucknow, and he got all the things together. She did not. She just held firm, said no. Because the buzz then was that she may become president in 1982 and give over the reins of power to Sanjay. Of course, this was a buzz. But I think Sanjay was the reason. I believe Sanjay was the real reason why she went in for elections also. Now, you have covered election, at least 10 elections you have covered. You have seen Indian politics very closely. Now, what I'm going to ask is, पहले के पॉलिटिक्स में और अब के पॉलिटिक्स में कितना डिफरेंस है, वो इस बुक में एक इंसिडेंट से समझ में आता है कि जयप्रकाश नारायण कम्प्लीटली अगेंस्ट है इंदिरा गांधी, बट फिर भी जब इंदिरा गांधी जयप्रकाश नारायण से मिलने बिहार में जाती हैं पटना में, तो कमला नेहरू का लिखा हुआ लेटर्स जयप्रकाश नारायण के पास है, और वो उस लेटर्स को इंदिरा गांधी को हैंड ओवर कर देते हैं, बिकॉज वो काफ़ी पर्सनल लेटर्स है और वो अपोजिशन के हाथ में लगती, अगर गवर्नमेंट के हाथ में लगती है तो वो इंदिरा गांधी के खिलाफ यूज हो सकता है, बट जयप्रकाश नारायण नहीं चाहते कि कोई भी पर्सनल अटैक इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हो. दैट वाज द लेवल ऑफ पॉलिटिक्स एट दैट टाइम. कितना बदल गया है पॉलिटिक्स, उसके बारे में आप क्या बताओगे? देखिए, वहाँ भी इंदिरा गांधी वेंट टू जेपी टू न्यूट्रलाइज हिम, एंड शी डिड न्यूट्रलाइज हिम. उस विजिट के बाद जेपी ने एक शब्द इंदिरा गांधी के खिलाफ नहीं किया. हाँ, he was disenchanted with the जनता लीडर्स, नो डाउट अबाउट दैट, एंड ही फेल्ट मेरा काम पूरा हो गया, हमारी लड़ाई जो थी वो हमने ख़त्म कर दी, नाउ यू गाइज टेक ओवर, जनता गाइज, एंड जो डेमोक्रेसी रिस्टोर हो गई. बट यू आर राइट, दोज लेटर्स दैट वर रिटन बाय इंदिरा गांधीज मदर टू JP's wife were pouring her heart. They were very good friends, pouring her heart out about the difficulties she faced in the Nehru household and all. And JP told his people, his associates, I don't want these letters to get into the wrong hands. Meaning, Janata Party ke leaders ke haath mein bhi pad gaya na, they will use it politically. And he used to think of Nehru as bhai. And so he had gone to Indira Gandhi and said, I don't want these to fall into the wrong hands, you must have them, and you do what you like with them. So yes, he had fought her bitterly, she had put him in jail, while in jail his kidneys were damaged forever. Yeah, of course. And yet, aap jo keh rahe hain na, there was, political fights have their own place, and relationships have their own place. So wo bahut badi cheez this happening today. ऐसा कुछ भी हो सकता है. You know, one keeps hoping. If nothing else, जितनी कटुता आ गई है ना सरकार और रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन के बीच में, जिससे डायलॉग भी नहीं है, आप बात करके सल्टा नहीं सकते. आपकी अपनी पॉलिटिक्स है, मेरी अपनी पॉलिटिक्स है.
But basically, after all, this country has to be run by consensus. It cannot be such a plural, diverse country. It's no country like this in the world as plural and diverse. But Okay. it can only be run by consensus. Okay, let's move on to the next chapter on Rajiv Gandhi. Okay, appointment of Rajiv Gandhi as the Prime Minister was very dramatic. 31st October, Indira Gandhi is assassinated. राजीव गांधी बंगाल में कैंपेनिंग कर रहे हैं, उन्हें खबर मिलती है कि इंदिरा गांधी को शॉट किया गया। प्लेन से वो दिल्ली आते हैं और दिल्ली में एम्स में इंदिरा गांधी का इलाज चल रहा है और बाहर ये डिसाइड हो रहा है कि कैसे प्रणब मुखर्जी को प्राइम मिनिस्टर ना बनने दिया जाए और जो पावर है वो गांधी फैमिली में ही रहे और राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। और इस सब को ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे अरुण नेहरू, जो कि राजीव गांधी के कजन है। आपने उस दिन को कवर किया, आप ठीक से बताओ कि क्या हुआ उस दिन। मैंने उस दिन ना मैं स्टेट्समैन में थी और सुबह जब हम ऑफिस में पहुंचे तो ये खबर आ गई थी कि शी बीन शॉट। सो वी वर ऑल, आई वाज सिविल राइट्स कॉरेस्पॉन्डेंट, आई वाज नॉट डूइंग पॉलिटिकल बीट। पर मुझे लगा, कहा कि भाई जो भी जाके एम्स में जाओ, just whoever picks up whatever tidbits you bring and it'll be put as part of the whole story. So हम पूरा दिन वहाँ रहे थे। And she, by the time, you know, जब आप कह रहे हैं ना अरुण नेहरू, she was had died. Announced किया BBC ने 2 बजे के लगभग, इन्होंने रात को किया, and that was a deliberate decision कि once it's been decided who will take over, only then will her death be announced, because they didn't want violence to take place and all, rightly so. But Arun Nehru was really afraid. और वो हॉस्पिटल, वो 8वें फ्लोर में बाहर जो रीडर्स भी आए थे उनसे बातचीत करना, everybody felt it was a good idea. Rajiv will be very non-controversial, a natural successor. Pranab Mukherjee, this also is a very controversial thing. Pranab Mukherjee ने क्या कहा प्लेन में वापस आते टाइम, whether a natural successor should be the number 2, whether it's interim arrangement or whatever. But he has written differently in his own books, that he had said Rajiv should become and we'll all support you. But बाद में प्रणब मुखर्जी ने किसी को कहा था कि it was P V Narasimha Rao who spread this about him, that he had said he wanted to be installed. खैर वो अलग चीज़ है। Arun Nehru was waiting at the airport to receive Rajiv. He completely rushed him to AIIMS, where he talked to Sonia, and this P.C. Alexander की किताब में जो है ये Sonia said you mustn't become, and then Arun Nehru ने कहा कि वो तो चाहते थे कि जैल सिंह की वेट भी नहीं हो वाइस प्रेसिडेंट। एंड इसका रीजन आप प्लीज बताओ कि जैल सिंह का वेट क्यों ना हो, क्योंकि जैल सिंह एक सिख थे और उनसे टेंशन चल रही थी राजीव की भी, और शायद ना करें तो ये चाहते थे। लेकिन पीसी अलेक्जेंडर ने भी ये कहा, राजीव ने भी ये कहा, वी शुड वेट फॉर जैल सिंह। एंड जैल सिंह जब आए और उन्होंने कहा था किसी को बाद में कि उस दिन व्हेन आई डिसाइडेड टू स्वेयर इन राजीव गांधी, मैंने इंदिरा जी के जितने भी एहसान थे मेरे ऊपर वो पूरे कर दिए थे। ऑफ कोर्स। ओके, जब ये हुआ 31 अक्टूबर को ये असैसिनेशन हुआ, इंदिरा गांधी का क्रिमिशन नवंबर 3 को हुआ, 4 दिन में, और उस 4 दिन में दिल्ली जल रही थी। आपने इस बुक में लिखा है कि राजीव गांधी वॉज कंफ्यूज्ड व्हाई ही डिड नॉट ब्रिंग आर्मी इन दिल्ली, और सिचुएशन कैसे कंट्रोल नहीं कर पाया, और was it because Arun Nehru was actually handling everything and not Rajiv Gandhi? What was Rajiv Gandhi's role? Rajiv Gandhi was near the body of his mother, but he had taken over, and Arun Nehru had called Narasimha Rao, who was Home Minister. That episode is also there. It's also in Vinay Sitapathi's book. But I named the person who had called and said, virtually asked Narasimha Rao to back down and not play the role of the Home Minister, but pass on every information to the PMO. So they were dealing with, they were the overarching authority during those 3 days. And that's when riots and killings took place, which India has still not forgotten. So you believe Rajiv Gandhi का उसमें ज़्यादा role नहीं है, because Arun Nehru की you have mentioned an incident when he comes out of hospital, he sits in his car, और आप बाहर कांग्रेस के वर्कर्स हैं और उनको वो चिल्ला के कह रहे हैं कि चूड़ियां पहन रखी है क्या, हमारी माँ को मार दिया, ऐसे करके. So basically he was trying to instigate. In fact, others had said, which I have not put in the book, others had told me at that time, and politicians also, he had said, मारो सालों को.
Arun Nehru. Arun Nehru said this. Okay. So, now coming to the Shah Bano case. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट शाह बानो के फेवर में वर्डिक्ट देती है और राजीव गांधी उस वर्डिक्ट को पलट देते हैं. There is a quote of Sonia Gandhi that you have. Rajiv, if you can't convince me about this Muslim women's bill, how are you going to convince the country? है ना? सोनिया गांधी की बात राजीव गांधी ने नहीं सुनी और क्या हुआ? देखिए, शुरू में राजीव गांधी was for the judgment. Of course. And judgment is about an old woman with 5 children, 45 years of marriage, being given a talaq and wants maintenance from her husband, who then refused to do it. Agreed? Refused to do it. Then she goes to court, not under the Muslim personal law, under the CRPC. And the lower court gives her 25 rupees of maintenance. उस समय होता होगा 25 रुपए. And the Muslim community went into, they felt it was a violation, interference in the Muslim personal law. So they were very agitated with that. And they were also agitated because the court had made references to the desirability of having a uniform civil code. Okay. वो भी एक element था. So to placate the community, and what influences on him, it wasn't only the Muslim leadership, it was also the senior leaders in the Congress, Chavan, Narasimha Rao, those who had ruled their states and had large chunks of Muslims in their state to contend with. Their opinion, they were very conscious of. That Rajiv decided to undo the Shah Bano judgment, bring in a Muslim woman bill, and when the Hindu community got agitated with this appeasement of Muslims, then he decided to open the locks at the Babri Masjid, Ram Janmabhoomi, which had been put there after 1949, soon thereafter, when in December 49, at the dead of night, Ram Lalla's idol was placed in the Sanctum Sanctorum. No, that is, but the thing is कि ऐसा क्या है कि राजीव गांधी को ये बात समझ में नहीं, he was considered very secular, है ना? But इतना appeasement. Or I think it was politically. Who was the advisor? You see, he had his advisors. Arun Nehru was an advisor. Arun Singh, at various times, various advisors were there. As I said, senior leaders played a big role also on this decision. But Rajiv was very forward-looking. When he came, it was new hope for India. And he took very quick decisions also. Voting age कम कर दिया, anti-defection bill ले आए, technology missions करे, Assam Accord, Punjab Accord, Mizoram Accord, wanted to take India into the 21st century. But when it came to caste, religion, and the hold it has on Indian psyche, he was naive. He was overall politically naive. He was not experienced. He was suddenly catapulted there in a position, and with a majority as large as 414 seats, unprecedented, unbroken so far. And yet he ran into these trouble. Caste and community conflict. Of course. Okay, now this Arun Nehru was the man behind Rajiv Gandhi becoming the Prime Minister. फिर अरुण नेहरू और राजीव गांधी के बीच में रिश्ते कैसे खराब हो गए और अरुण नेहरू ने कैसे बोफोर्स की चीजें, बोफोर्स स्टोरी जो है वो लीक कर दिया स्वीडिश प्रेस में, रेडियो को, वो बताइए आप थोड़ा. देखिए, अरुण नेहरू पहले 6-7 महीने तो राजीव, मतलब he was the most powerful. He was only power minister of state for power. लेकिन बहुत powerful थे, the number 2 calling the shots, and then they fell out. Yeah, why? They fell out because he had under par, which Arun Nehru says, Rajiv Gandhi, there were certain power, agreements with Swedish companies, which he wanted him out of. So he obviously felt, and this is part of a deposition of Arun Nehru himself to the CBI years after. Okay. As a result of this, he took over the discussions on Bofors himself directly. खैर वो तो अलग कहानी है बॉफर्स वाली, उसकी जिसकी वजह से भी राजीव गए. And then he didn't want to take him on frontally because he was so powerful, he could damage him. Yeah. So he made him Minister of Internal Security. That Arun Nehru told me I didn't want, but I was given it. Yeah.
And slowly, and then Sonia Gandhi felt he was doing surveillance on them, a whole lot of things. Yeah. He says Sonia Gandhi was one of the reasons why I fell out with Rajiv Gandhi. And he admitted this to me, I was 50% of the problems that Rajiv faced. And then, of course, Rajiv got I was the problem, Arun Nehru was the problem. Arun Nehru said, I was 50%. I was the problem that Rajiv had. That Rajiv, he admitted. But then he said, we were younger. This is later on that he said this. Okay. But then Rajiv sacked him. Yeah. And from He the offered government. him some UK में जाकर के उन्होंने ऑफर किया कि हम आप भेज देता हूँ आप उधर चले जाओ UK चले जाओ as High Commissioner. He told Arun, I know what you are doing. You're shunting me. I'm not stupid. And that day he told him in that meeting, I'm going to fight you. Yeah. And this was not known. It was Hansraj Bhardwaj, who was law minister at one time, who told me it was a Swedish radio came out with this in 87, breaking the Bofors story of middlemen and so on. And middlemen had been prohibited by Rajiv Gandhi. So Bhardwaj said that we knew it was Arun Nehru who leaked that story to Swedish radio. Now, I don't know whether this is true. I have documented it. But certainly Bofors became, then of course he joined hands with Vishwanath Pratap Singh, and after that of course VP Singh 2.5 years down the line created a national alternative to the Congress. And VP Singh was a minister in Rajiv Gandhi government and he resigned after this Bofors scandal. And then VP Singh and this Janata Party thing came up. और फिर 1989 में इलेक्शंस होते हैं, कांग्रेस को 195 सीट्स मिलती है, राजीव गांधी गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए नहीं जाते हैं और फिर जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनती है. 3 कंटेंडर, टॉप कंटेंडर, देवीलाल, चंद्रशेखर, वीपी सिंह. कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसको लेके बहुत स्ट्रैटेजी बनती है. फिर सेंट्रल हॉल में आई फॉरगॉट द डेट, वहाँ पे ये डिसाइड होता है कि देवीलाल प्राइम मिनिस्टर बनेंगे. फिर एक जर्नलिस्ट दौड़ते हुए बाहर आता है सेंट्रल हॉल से और कहते हैं देवीलाल प्राइम मिनिस्टर बन रहा है. 2 मिनट के बाद वो चीज़ें बदल जाती है. देवीलाल कहते हैं कि वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं. फिर एक जर्नलिस्ट भाग के आता है, कहता है कि किल दैट स्टोरी, वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं. यू वर देयर एट दैट सेंट्रल हॉल. आप उस दिन का पूरा जो भी ड्रामा हुआ उसको विवरण जो है उसको थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए कि कैसे वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि चंद्रशेखर भी अगेंस्ट थे वीपी सिंह के. ये कहानी ना पूरा दिन चली गया. क्या था कि जब कैंपेन हो रहा था तो वीपी का नाम था, वीपी विकल्प है राजीव के, एंड देवीलाल also was taking VP's name, projecting him. But when the elections were, the results came, the mandate was really clearly for VP Singh, but Devilal threw his hat in the ring, and he was egged on by Chandrasekhar, who did not want VP to become, and he threatened, "मैं खड़ा हो जाऊंगा," but he knew that MPs were not going to be for him. So उन्होंने देवीलाल को सामने किया. तो अब उड़ीसा भवन में फिर मीटिंग, सारा दिन मीटिंग्स चली थी. वीपी के घर में, अरुण नेहरू के घर में. अरुण नेहरू was acting on behalf of VP Singh. And then finally in Odisha Bhavan, when a decision was taken, literally an hour and a half before the swearing in had been, the parliamentary party election had been announced to take place in the central hall of parliament. तो वहाँ ये फॉर्मूला तय किया गया. देवीलाल भी थे, बिजू पटनायक भी थे, अरुण नेहरू भी थे, वीपी थे कुछ समय के लिए, चंद्रशेखर थे. ऐसे जो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, कैसे रियल पॉलिटिक्स वर्क करता है. तो ये खिचड़ी पकाई गई कि देवीलाल, क्योंकि देवीलाल को फेस सेवर देने के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया था चंद्रशेखर को कि मैं बनूंगा. तो पहले नाम देवीलाल का दिया गया कि वो बने हैं, और चंद्रशेखर को बुला के बिजू पटनायक ने कहा तो वो मान ले और चले गए. और उसके बाद वीपी सिंह, देवीलाल खड़े होके वीपी सिंह का नाम लेंगे. सो दिस शराड was worked out, which I believe was the genesis of the problem that VP faced during 11 months of his time as Prime Minister. ये उस दिन मुझे याद है सेंट्रल हॉल में ये हुआ और तालियों से गूंजा. बट वन चंद्रशेखर सिटिंग देयर, चेहरा तमतमा रहा था. एंड ही सेड आई हैव बीन बिट्रेड, एंड ही फ्लाउंस्ड आउट. उनको मनाने की कोशिश की गई है, यू टेक व्हाटएवर पोर्टफोलियो. बट हाउ डिड दीस गाइस मैनेज टू कंट्रोल देवीलाल, क्योंकि देवीलाल ने अपना रिंग हैट रिंग में डाला था.
तो फिर वो कैसे मान गए देवीलाल की ठीक है चलो वीपी सिंह को ही बना? क्योंकि उनको क्लियर लग रहा था कि होने वाला नहीं है उनका मामला, और उन्होंने कहा व्हाई डोंट आई डू हार्ड बार्गेनिंग, ही वांटेड टू बी होम मिनिस्टर, बट अरुण नेहरू अड़ गए थे, नॉट होम की राजा का वो जान तोते में, तोते को अपने पास रखा। और ये किसी ने कहा था उन्हें, और अरुण नेहरू ने कहा नहीं नहीं, किसान नेता हैं आप, इनको एग्रीकल्चर मिलेगा, डेप्यूटी पीएमशिप दे देंगे। तो फाइनली वो मान गए, बिकॉज ही सॉ द राइटिंग ऑन द वॉल। एंड एज आई सेड, वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी। एंड वीपी सिंह की कॉन्ट्रीब्यूशंस 11 मंथ्स में, 11 मंथ सबसे आई थिंक काफी छोटे टाइम के लिए वो प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टरशिप में ऐसा एक डिसीजन लिया गया जिसका कि लास्टिंग इम्पैक्ट अभी तक इंडिया फील करती है, एंड दैट वाज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन and the empowerment of OBCs, giving them reservation in government jobs, later in educational institution. That power, जो कहते थे वीपी सिंह, ये कम्युनिटीज चाह रही हैं नॉट टोकनिज्म, नॉट पेट्रनाइजिंग, वो चाहते हैं सत्ता में शिरकत। Those were the words he used to use. ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आया? मंडल कमीशन तो धूल खा रहा था, वो जो रिपोर्ट था वो तो बहुत पहले की बनी, वो एक टूल था। ऑफ कोर्स, वो ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था मंडल कमीशन के लाने? देखिए, ट्रिगरिंग पॉइंट था हिज गवर्नमेंट वाज beleaguered एंड इट वाज अ सर्वाइवल टेक्निक। अगर वो ले आते हैं ये, तो देवीलाल की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। अगर मान लो नहीं लाते, और देवीलाल ने रैली अनाउंस की थी, देवीलाल डिमांड करते हैं इसकी, तो ओबीसी सारे एमपीज उनके साथ चले जाएंगे। तो वीपी डिड अ प्रीएम्प्टिव मूव, बट there are things for which moments where you feel certain decisions का time आ जाता है। And this OBC politics from 67 onward, the rise of the OBCs in the politics, and then they were part of the Janata Party, then also the parties that supported VP Singh that merged into the Janata Party. So these are historical things, and today you are right, it is no prime minister has been able to reverse that decision. That's correct. And BJP would not be what it is today if Mandal had not happened. It would have been a Baniya Brahmin party. आज तो you have an OBC prime minister, you have MBC, Mahadalit, Pasmanda Muslim, power is devolving ना। So ये एक बहुत बड़ा निर्णय था बीपी का, for whatever reason। सो 11 महीने वीपी सिंह की सरकार चलती है, फिर उसमें से बीजेपी गवर्नमेंट वापस कर लेती है, वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है, फिर चंद्रशेखर कांग्रेस के सपोर्ट से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। 2 साल के बाद 91 में फिर इलेक्शंस होता है, और फिर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव, जिनको कि आज भी कहा जाता है कि कांग्रेस उन्हें ड्यू क्रेडिट नहीं देती। ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के टेन्योर में एक सबसे बड़ा इवेंट जो इंडिया देखता है, वो देखता है बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का। और ऐसा कहा जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव ने वाजिब कदम नहीं उठाए उस डिमोलिशन को रोकने के लिए। आपने अपने बुक में लिखा है कि पीवी नरसिम्हा राव की एक जर्नलिस्ट से बात भी हुई, और उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए होने दिया कि भारतीय जनता पार्टी की मंदिर की राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए आप। देखिए, 4 जर्नलिस्ट गए थे, निखिल चक्रवर्ती उसमें थे, प्रभाष जोशी उसमें थे, राम बहादुर राय उसमें थे, जिन्होंने ये बताया, और कहा कि निखिल चक्रवर्ती ने पूछा कि सुना है कि आप उस दिन जब मस्जिद गिर रही थी तो आप सो रहे थे या पूजा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि दादा जो कहते थे उनको, निखिल चक्रवर्ती को, मैं राजनीति में बड़ा हुआ हूँ कि मैं चाहता था कि ये मंदिर की राजनीति ख़त्म हो, और मैंने ये होने दिया। भाजपा की जो राजनीति है मंदिर की, वो ख़त्म हो, और मैंने होने दिया ये। तो ये एक उनका मानना था कि, और मुझे लगता है उनको दिख रहा था कि शायद होगा। उनको ये भी मैंने कहा इसमें कि खुशबू ठाकरे और सुदर्शन जो हेड करते थे, के सुदर्शन RSS को, उन्होंने सोमपाल जो MP रहे, वीपी सिंह के भी करीब थे, बीजेपी में गए, उनको बताया था कि हमको मालूम, हमने नरसिम्हा राव को बताया था कि ये होने जा रहा है, आप अरेंजमेंट्स कर लेना। सो द क्वेश्चन हैंग्स देयर, डिड, आई डोंट थिंक नरसिम्हा राव कल्यूडेड with BJP कि हम मंदिर को गिराएंगे, but was he had the information, but he had the, was he complicit? Yeah, exactly.
that he knew but didn't do anything or felt couldn't do anything, and the balance of advantage lay in just being there and allowing things to happen. And he wanted, as he said, a festering sore would go, which had been affecting Indian politics, and that he had in his mind, which also I quote people, to build a temple there himself. Okay, that was the plan. That was the idea. Okay, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद बीजेपी का राइज होता है और यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट भी बनती है, बट आपने मेंशन किया है कि बीजेपी के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं चाहते थे कि कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर बने, और उन्होंने ये बात प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव को भी कही थी. व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन अटल बिहारी वाजपेयी एंड कल्याण सिंह? ये क्या इशू था? अच्छा, ये जो आपने कहा ना, वो नहीं बने कल्याण सिंह, वो मैसेज गया मोतीलाल वोरा को न्यूयॉर्क से, क्योंकि वाजपेयी ने नरसिम्हा राव से बात की, ये मैसेज गया, तो ये मुलायम की सरकार जो बनी थी एज अ रिजल्ट. खैर, कल्याण सिंह वाज पार्ट ऑफ द अडवाणी कैंप. ही वाज अ प्रोटेजी ऑफ लाल कृष्ण अडवाणी. उत्तर प्रदेश वाज अटल बिहारी वाजपेयी's turf, political turf. And he didn't want the power to go to the other side. ये भी, very fascinating story, which also I deal with in the Vajpayee chapter, is this political jodi. There have been fascinating political jodis in India. Sardar Patel and Nehru, Advani and Vajpayee, and of course now Amit Shah and Narendra Modi. They're all very different, but powerful political jodis. And Advani and Vajpayee were rivals, but collaborators also. And never allowed things to go beyond the brink, उनके रिश्ते में. तो जब PM बने वाजपेयी, तब से, और जब से न्यूक्लियर टेस्ट भी हुआ, जिसमें अडवाणी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया टिल द लास्ट मिनट, विच हर्ट अडवाणी वेरी डीपली. And I think the situation deteriorated because Brajesh Mishra, principal secretary of Vajpayee, almost de facto became number 2, and he used to be called de facto PM also. So Advani was pushed out. That is a very fascinating story also, कि कैसे वाजपेयी ने न्यूक्लियर टेस्टिंग में जो ग्लोबल फॉल आउट हुआ सैंक्शंस की वजह से, उसको ब्यूटिफुली कंटेन किया. बट अंदर खाने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में विद इन द बीजेपी जो फॉल आउट हुआ, उसको नहीं कंट्रोल कर पाए. न्यूक्लियर टेस्ट के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को क्रेडिट दिया था, बट 1978 या 79 में उन्होंने तो न्यूक्लियर टेस्ट को अपोज भी किया था. ये क्या स्टोरी है? ये वाजपेयी वाज आल्सो फ्लिप उनका था. 50s में ही वॉज अ पीसनिक. हिरोशिमा के बारे में उन्होंने बहुत मूविंग पोएम लिखी थी. 60s में वो दहाड़े थे पार्लियामेंट में. एटम बॉम्ब का जवाब, एटम बॉम्ब जब चाइना ने टेस्ट किया था 64 में. 79 ही वॉज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ मोरारजी देसाई, हु वॉज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपनाइजेशन, एंड ही टुक अ स्टैंड अगेंस्ट इट, गोइंग न्यूक्लियर. वहाँ CCPA में वोट हुआ था इसको लेके 5 लोगों के बीच में, but he voted against it. And then 1998 he did it, and he was influenced by Narasimha Rao, who got everything ready in 95. 96 में जब वाजपेयी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को हेड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा खैर उनकी मेजॉरिटी नहीं थी, तो बाद में हुआ ये. तैयार है सब कुछ, आप जाकर टेस्ट कर लो. ओके, चलिए, वाजपेयी का तो काफ़ी इवेंटफुल टेन्योर रहा है. पोखरा न्यूक्लियर टेस्ट, कारगिल वॉर, पार्लियामेंट अटैक, बहुत सारी चीज़ें हुई, और 2004 में फिर वो हार जाते हैं, और फिर 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट बनती है, और ऐसा होता है कि सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने वाली थी, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पे डिसीजन बदल गया. इस फैसले के बदलने के पीछे की जो कहानी है वो आप हमें बताइए. उस समय देखिए, जब एकदम रेडी था, एक तो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की वो लीडर चुनी गई उस सैटरडे को. मुझे इतनी क्लियरली डेट्स की बजाय वो डेज याद है. और Ahmed Patel had got in touch with various people even before the election results came out, like VP Singh, जो इतने खिलाफत किया था, उनके हस्बैंड को रिप्लेस किया था, कि कैसे मैनेज किया जाए अगर चांस लगता है उनको प्रधानमंत्री बनने का. तो she was elected. All the leaders had been talked to. ये VP सिंह ने मुझे बताया, सोमनाथ चैटर्जी CPM ने बताया कि it was all set and we had supported her, and that her children were the ones who were against it. And suddenly a meeting थी उस दिन,
मंडे के दिन। लीडर्स को बता दिया गया था, एक डिनर हुआ था संडे को, जो कि बाद में यूपीए बना वो पार्टीज का। तो नटवर सिंह ने कहानी बताई है और हल्के से उन्होंने अपनी किताब में भी इसका इशारा किया हुआ है, बट मुझे बहुत खुल के पूरा एपिसोड बताया था कि वो मनमोहन सिंह को ढूंढ रहे थे, 10 जनपद पहुँचे और वहाँ बिकॉज आना जाना उनको फ्री एक्सेस था, तो सेक्रेटरीज ने कहा आप अंदर चले जाइए। अंदर देयर वाज मनमोहन सिंह बैठे थे, सोनिया गांधी लुकिंग वेरी डिस्ट्रॉट, प्रियंका थी, सुमन दुबे आए, एंड देन राहुल वॉक्ड इन एंड राहुल ने माँ को कहा माय दादी वाज assassinated, my father was killed and in 6 months you are going to be killed. I will not allow you. I give you 24 hours to make a decision, otherwise I will do something drastic and extreme. तो मनमोहन सिंह को कैसे पिक किया गया? Then she decided on Manmohan Singh, and he was of course she has said कि I thought of Manmohan Singh, कभी ऐसा मौका मिलता है तो I thought of Manmohan Singh. He was not a politician. He would be loyal to them. Yeah. He was no threat at all. He was a technocrat, low profile. और एक बार फिर से प्रणब मुखर्जी को साइडलाइन कर दिया। प्रणब मुखर्जी को नहीं बनाया। Okay. The Prime Minister India did not get. India did not get. Yes. Okay. So UPA गवर्नमेंट 2014 में चली जाती है, फिर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद क्या क्या डिसीजन लिए कि आपको पता है, उस पर नीरजा चौधरी अगली किताब लिखेगी, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा होता है तो हम नीरजा चौधरी को फिर से इंटरव्यू करेंगे। Okay, it was lovely talking to you, ma'am. Thank you. It was a very nice conversation. Thank you for having me. That's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channels, Indian Express and Jan Satta.